Yes, dear students. So, your chapter Ant and the Cricket I was teaching in my previous video, but because of some issue, it suddenly get destroyed. I don't know why, but yes, it got. So I want every one of you to pay attention in this video. So first of all, we are starting a wonderful chapter, which is this is not chapter, okay, this is a poem, and it is inside the best Christmas present only. What happened, dear students? I wanted to ask you one question. If you can answer that, you answer, okay, in the comment section. So what do you think, what is the cricket? You will say, ma'am, a game, right? But do you have seen a cricket as an animal? Yes. क्रिकेट इज़ एन इंसेक्ट ऑल्सो, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, लेकिन हरा हरा कलर का ग्रास ओवर टाइप का वो होता है. अब जो आपका ये पोम है, ये क्या है आपकी, ये आपकी एक जो है टाइप की फेबल है. अब मैं पूछूंगी व्हाट इज़ अ फेबल. आप सबका आंसर क्या आएगा? फेबल क्या होता है? सबसे पहले मैं यही पूछूंगी, क्योंकि ये जो आपकी पोम है ना, ये फेबल है. फेबल क्या होता है? आपकी एक तरह की स्टोरी ही होती है. फेबल इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरी ओनली. फेबल एक टाइप की स्टोरी होती है, लेकिन ये स्टोरी ऐसी वैसी स्टोरी नहीं होती. ये स्टोरी एक मोरल जो है हमें कन्वे करती है. If I speak in English, I will tell you this, that a fable is a story that conveys always a moral. और इस स्टोरी में हमेशा क्या होता है? इस स्टोरी में हमेशा एनिमल्स को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ करेक्टर टू मेक द स्टोरी एज अ फनी स्टोरी. ओके, इतना क्लियर हो गया. अब इस स्टोरी में कुछ बात की गई है 2 लेग्ड और 4 लेग्ड इंसेक्ट्स की. तो सबसे पहले मेरे को इतना अंतर बताओ कि 4 लेग्स और 2 लेग्स इंसेक्ट में क्या अंतर हुआ. आई नो दैट यू आर सीइंग दिस चैप्टर फर्स्ट टाइम, यू डोंट नो. कभी कभी क्या होता है, जो आपके 2 लेग्ड वाले लोग होते हैं ना, 2 लेग, वो वाले लोग जो हैं बड़े आलसी होते हैं. उनको हर चीज़ करने में बड़ा आलस आता है. जैसे सम चिल्ड्रन इन योर क्लास विल बी like that, they always do hard work, they study before the examination come, but some children are that they say no, अभी तो पूरा 1-2 महीने का टाइम है, अभी तो आराम से पढ़ेंगे, है ना. So like this only 2 legged and 4 legged people are. Okay, अब हम पढ़ते हैं स्टोरी को, ठीक है. A silly young cricket accustomed to sing through a warm sunny months of gay summer and spring. इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि a silly young cricket, यानी कि आपका एक क्रिकेट है, एक कीड़ा है, ठीक है. क्रिकेट कीड़ा ही होता है एक. तो ये जो है, ये क्या कर रहा है? एक्यूज टू सिंग, यानी कि इसको गाना गाने की बहुत आदत है, ठीक है. और फिर जब वार्म सनी डेज है तब उसको गाने गाने का बहुत मन कर रहा है. किसको? क्रिकेट को. और ये गा भी रहा है. तो यूजुअली डियर स्टूडेंट, इफ आई विल टेल यू दिस, तो समर्स में क्या होता है, आपको चींटी जो कीड़े होते हैं ये सब अपना खाना बचाते हैं, ताकि विंटर्स में ये जो है हमें दिखते नहीं है बाहर. दिखते नहीं है ये हमें बाहर. कब? विंटर्स में अगर बात की जाए. अब देखो, बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. तो ये जैसे ही घर आया, जो ये क्रिकेट है, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैज़ कम. क्योंकि पूरे समय तो इसने गाना ही गाया, पूरे समय इसने कुछ भी फूड कलेक्ट नहीं करा, कुछ भी इसने शेल्टर अपना फाइंड नहीं करा, सिर्फ ये गाना ही गाता गया. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन अ स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. इसको कुछ भी अपनी अलमारी में नहीं मिला, ठीक है. और स्नो पड़ी थी, ठंडियों में स्नो पड़ी थी. ओह, व्हाट विल बिकम ऑफ मी, सेज द क्रिकेट. क्योंकि इसने तो पूरी समर में मस्ती मारी, सब चीज़ करा. लेकिन अब जब विंटर्स आ गए तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा वरीड है कि अब ये क्या करेगा, क्योंकि इसकी कबर्ड में तो कुछ चीज़ स्टोर ही नहीं है जो क्रिकेट है.
At last by starvation and famine made it bold. Starvation का मतलब होता है भूख के कारण मर जाना. Starvation आपको होता है जब आपको बहुत भूख लगती है, आपको खाना नहीं मिल रहा, वो आपको starvation होता है. famine होता है scarcity, यानी कि फूड की कमी, आपको फूड मिल ही नहीं रहा है कहीं से. ठीक है. at dripping it with wet and all trembling with cold. अब उसके पास तो कुछ था नहीं, शेल्टर भी नहीं था, तो उसको तो वेट और कोल्ड से गुजरना पड़ रहा था. Away he set off to a miserly ant. अब वो क्या, एक एंट के पास, क्योंकि एंट तो बेचारी ने मेहनत कर करके सारा फूड शेल्टर अपना बना रखा था. To keep him alive, he will grant him shelter from rain and a morsel of grain. तो उसने ये सोच के वो आयन के पास गया कि वो कम से कम मेरे को कुछ शेल्टर दे देंगे ताकि मैं इस ठंडे से बच सकूं, और साथ ही साथ मेरे को खाने को भी कुछ चीज़ दे देंगे. He wished only to borrow. I did repay it tomorrow. मैं कोई भी चीज़ अगर borrow करूँगा तो मैं उसको कल वो चीज़ लौटा दूँगा. If not, he must die of starvation and sorrow. अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं starvation यानी कि जो भूखापन है उससे ही मर जाऊँगा. Says the ant to the cricket. अब उन्होंने जो says the ant to the cricket, I'm a servant and friend, but we ants never borrow. We ants never ant. एंट्स ने कहा कि हम तो कभी क्या कहते हैं बोरो भी नहीं करते, यानी कि हम लोग कभी भी जो है क्या कहते हैं कोई भी चीज़ जो है वो लेते नहीं है, और बोरो तो ये करते नहीं है, साथ में हम लोग कोई भी चीज़ लैंड भी नहीं करते, यानी कि कोई भी चीज़ देते भी नहीं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले एनीथिंग व्हेन द वेदर वाज वार्म. अब उसने पूछा, कान ने पूछा, जब तुम्हारा वेदर अच्छा था, गर्मी थी, तब तुमने कुछ काम करा, तब तुमने कुछ स्टोर करा. कॉट द क्रिकेट. कॉट मीन्स उसने बोला, और ये जो कॉट शब्द है ये आपका ओल्ड इंग्लिश का शब्द है. ठीक है. नॉट आई, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट for all nature looked gay. तो उसने बोला कि नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे को तो इतना मतलब मेरा दिल इतना हल्का है कि मेरे को जो ये गर्मी आई थी तब मेरे को इसका मौसम इतना अच्छा लगा कि मैं गाना ही गाते रहा. You sang sir, you say. उसने बोला कि मैं गया सर, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने गाना क्यों गाया, आप तो उस समय तो काम करते हैं. गो देन says the ant. उसने कहा कि जाओ फिर, एंड डांस द विंटर अवे. जो अपना विंटर है वो भी डांस कर करके निकाल दो, यानी कि डांस करो, इन्जॉय करो, वेस्ट करो अपना टाइम, और विंटर भी ऐसे ही निकाल दो. दिस एंडिंग ही हैज़ लिफ्टेड द विकेट, यानी कि बहुत ही मतलब वो चले गया फिर. एंड आउट द डोर टर्न्ड द पुअर लिटिल क्रिकेट. और फिर वो जहाँ आंट रहती है वहाँ से चले गया. Flocks call this a fable. I want it true. Some crickets have 4 legs, some have 2. अब उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि ये फेबल है, यानी कि एक ऐसी स्टोरी है जो मोरल कन्वे करती है, लेकिन नहीं, ये सच में एक मोरल स्टोरी कन्वे कर रही है. कोई क्रिकेट के पास 4 legs होते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग में भी अगर हम देखें तो कोई लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कोई लोगों के पास सिर्फ 2 होते हैं, यानी कि वो मेहनती नहीं होते, वो केयरलेस होते हैं, अपना काम समय पे नहीं करते हैं, है ना. अब आ जाते हैं हम ग्लॉसरी में. ठीक है. ग्लॉसरी भी मैं आपको आज याद करा के छोड़ूंगी. ठीक है. तो सबसे पहले देखो, एक्सटॉम टू सिंग, यानी कि यूज टू सिंगिंग इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग, यानी कि यूज टू सिंगिंग या इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग. अब आते हैं फेमाइन में. स्कार्सिटी ऑफ फूड, देख लो ध्यान से, मैं पूछूंगी. हाँ, स्कार्सिटी ऑफ फूड. ठीक है. और फिर आगे क्या है, हैविंग नथिंग टू ईट. हैविंग नथिंग टू ईट. ठीक है. आप सबको आ गया होगा. अब ये है 3rd नंबर पे आपका, ले नथिंग बाय, यानी कि सेव नथिंग. ले नथिंग बाय, यानी कि सेव नथिंग. ले नथिंग बाय, सेव नथिंग. क्योंकि जो आपका क्रिकेट था वो कितना बुद्धू था ना, उसने कोई भी चीज़ अपनी सेव नहीं करी थी, है ना. तो सेव नथिंग.
ये आप लोग इधर क्या लिखेंगे, सेव नथिंग। और जिन बच्चों को ग्रॉसरी लिखने का होमवर्क मिलता है वो लोग ग्रॉसरी लिख लो, अभी टाइम है, ठीक है। अब हम लोग फटाफट पूछ लेते हैं। एक्सटॉम टू सिंग यानी कि यूज टू सिंगिंग, क्या था, यूज टू सिंगिंग, इन अ हैबिट ऑफ सिंगिंग। वेरी गुड, आप सबको ये याद हो गया होगा। फैमाइन, फटाफट बताओ कमेंट में। स्कार्सिटी ऑफ फूड या हैव नथिंग टू ईट। ले नथिंग बाय सेव नथिंग। कॉट, सेट। कॉट तो मैं भूल ही गई, अरे कॉट भी है। तो कॉट जो है आपका वो कौन सा शब्द होता है, मैंने आपको लेसन पढ़ते समय बताया था कि कॉट आपका शब्द का मतलब सेड ही होता है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में होता है। किस में होता है, ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश वैसे आप लोग आजकल पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जो कॉट था उसका मतलब सेड ही होता था। अब जब आप 8th क्लास में आ गए तो जो ये कॉट शब्द है इसका यूज़ किया जा रहा है ताकि आपकी इंग्लिश को जो है थोड़ा सा एडवांस बनाया जाए। अब आते हैं हम लोग वर्किंग विद द पोम में, ठीक है। तो आप या तो वर्किंग विद द पोम में हेडिंग डाल लो, या फिर क्वेश्चन आंसर हेडिंग डाल लो, कुछ भी हेडिंग डाल सकते हो, या आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आप हेडिंग डाल सकते हो, है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी में नोट करना है अच्छे से। मैं आपको अच्छे से रिपीट करवाऊंगी, फिर मैं आपको आंसर्स भी अच्छे से रिपीट करवाऊंगी। आपको याद करते करते कॉपी में भी लिखना है, मैं डिक्टेट करूँगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपको एकदम प्रॉपर आंसर मिले और आप उसे कॉपी में भी नोट कर लें। थोड़े समय बाद मैं खुद आपके लिए वो क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगी भी इस ऐप में, मतलब हमारे चैनल में। तो आप क्या कहते हैं, चिंता मत करो कि हमें क्वेश्चन आंसर डिक्टेट क्यों कर रहे हैं। ये आपका स्पीड टेस्ट हो है, ये आप लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख पा रहे हैं फ़ोन से देख के कि आप अपने मन से धीरे धीरे स्पीड में ही लिखेंगे। इट फॉर योर वेलफेयर ऑन डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन देखते हो फटाफट। What will become of me? The cricket says, oh, what will become of me? ये क्रिकेट ने कहा, उसके बाद क्या कहा, when does it say? When does he say it? Say it. और अब आएगा क्वेश्चन, and why? क्यों कहा होगा क्रिकेट ने ऐसा, कमेंट में बताओ फटाफट, छोटी सी लाइन में। अगर आपको नहीं पता तो फटाफट आंसर कर लेती हूँ ये क्वेश्चन। आप लोग, मैं डिक्टेट करूँगी डियर स्टूडेंट्स, तो आपको जब मैं आंसर करूँ तो एकदम ध्यान से मेरे आंसर को सुनना है, ताकि क्या हो, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और साथ आपको ये लर्न भी हो जाए, है ना। अच्छी बात, लर्न भी हो जाएगा आपको तो अच्छी बात होगी ना। यस, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न भी करने हैं साथ ही साथ जब मैं करवा रही हूँ, और साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चन आंसर्स को करवा रही हूँ तो आप लोग की स्पीड इतनी होनी चाहिए, क्योंकि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, कि आप इन्हें फटाफट कर लें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ। आप फटाफट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे द क्रिकेट सेज दिस, द क्रिकेट says this, the cricket says this, when in winter, when in winter, when in winter he finds his cupboard empty, when in winter he finds his cupboard empty, cupboard empty। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपने लिख लिया होगा कबर्ड एम्प्टी तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। एंड देयर इज़ नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, एंड देयर इज नॉट अ क्रम, and there is
and there is not a crumb to be found on ground. इतना हो गया आप सबका? हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में. स्नो कवर्ड ग्राउंड. टू बी फाउंड ऑन ग्राउंड नहीं है, टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. स्नो कवर्ड ग्राउंड हो गया. मैं लास्ट में आपको एक और बार रिपीट करवाऊंगी, चिंता मत करो अगर छूट भी रहे तो. स्नो कवर्ड ग्राउंड के बाद क्या आएगा? देखो, ही वॉज वरीड, क्योंकि भाई अब तो उसने मेहनत तो कर ही दी. ही वॉज वरीड. वरीड, कोई बच्चे वरीड कहते हैं, कोई बच्चे वरीड कहते हैं, दोनों ही सही हैं. ठीक है. That would he that would he die would that he was worried that would die if he was worried that he will die. ठीक है, आप लोग he will die लिखेंगे. Die if he did not get any food. मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट नोट डाउन करो. फाइंड इन द पोम द lines that means the same. Only 2 times I am repeating, okay? The same as neither a borrower nor a lender be. तो विच लाइन्स आर दीज? तो आपने जब चैप्टर पढ़ा था ना डियर स्टूडेंट, तो अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे लिखा है बट वी आंट्स. मैं यहाँ पे आपको लिए थोड़ा आसान कर देती हूँ. बट वी आंट्स नेवर बोरो, बट वी आंट्स नेवर लेंड. इसको बराबर नोट डाउन करो. एंट्स, मैंने भी यहाँ पे मिस्टेक कर दी, पता है. आंट्स आपको नहीं बोलना है. पता है मेरे को भी आजकल बच्चों को मैं जब सुधारती हूँ ना प्रोनाउंसिएशंस में, तो क्या होता है ना, कभी कभी टीचर भी समटाइम्स सेइंग अगेन एंड अगेन दैट पर्टिकुलर रॉन्ग वर्ड, शी ऑलवेज हैव द हैबिट ऑफ सेइंग दैट वर्ड ऑन, राइट. मैंने अभी आंट कह दिया. एंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स. बट वी एंट्स नेवर बोरो and next क्या है? we ants never lent. ठीक है, लिख लिया. मैंने आपको 2 बार सब चीज़ रिपीट करी है. और डोंट फॉरगेट टू राइट दी स्टेटमेंट्स इन योर इन्वर्टेड कॉमास. ओके, वेट, इन योर इन्वर्टेड कॉमास, जो आपके इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, उनमें ही लिखना ये सब चीज़ों को. ठीक है. देन सी योर नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो देयर ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन ओनली. What is your opinion of the ants principles? आपने ants के प्रिंसिपल देखे ना, उसने क्या बोला? बट वी ants never borrow. यही बोला था एंड ने.
है ना, आप लोग यहाँ से कॉपी करो, यही बोला था एंट ने, तो फटाफट आंसर लिखते हैं। अच्छा उसके लिए जगह छोड़ दो डियर स्टूडेंट्स, पहले आंसर लिख लो। आई थिंक द एंट्स प्रिंसिपल, यस यस, सबसे पहले लिखो यस, आई थिंक द ants principles are right, ants principle are right, as we must work hard, I'm repeating 2 times, we must work hard, and then we can enjoy fruits of our own actions, however I also feels that if someone, आप लोग सोचोगे आज मैम हमें सारी चीज़ों का मीनिंग नहीं बता रही है। डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनिंग ही बताऊँगी क्लास में, ठीक है। इफ़ समवन, आपको याद भी करा के ही छोड़ूंगी, ठीक है। इफ़ समवन genuinely, I will write the spelling, don't worry, genuinely, wait, I am writing, okay। देखो यहाँ पे genuinely की स्पेलिंग लिख रही हूँ मैं। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया बीच में, शिट, वेट, हाँ अब देखो genuinely की स्पेलिंग, GEN, डियर स्टूडेंट, GEN, इतना लिख लिया सबने, GEN, रिटन UINET, genuinely, टी नहीं लिखना है, हाँ एल लिखना है, सॉरी, ये ना मेरे को आदत हो जाती है कभी कभी ना टी मारने की चीज़ों में। ये genuinely ऐसे होता है, मैं आपको एक बार फिर से स्पेलिंग रिपीट करा देती हूँ, GENUINELY, ठीक है। ये गलत लिखी है मैंने क्योंकि मेरा जो स्टाइलिश पेन है डियर स्टूडेंट वर्क नहीं कर रहा है, तो सॉरी फॉर दैट, ओके। जेन्युइनली, लेकिन मैं आपको बता दी स्पेलिंग, चिंता मत करो, ओके डियर स्टूडेंट। अगेन आई एम टेलिंग, GENUINELY, genuinely, needs help, then we must help them, we must help them, हो गया सबका हो गया होगा ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, देखो अपनी बुक्स में, अपनी बुक्स लेके नहीं बैठे हैं तो टीचर की बुक में ही देख लो। थर्ड क्वेश्चन देख लो, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर। तो इसने क्या कहा कि जाओ तुम विंटर्स में तो डांस कर लो। तो मैं फटाफट ये क्वेश्चन को भी बार बार रिपीट करूँगी ताकि आप लिखें। द एंट tells the cricket to dance the winter away,
away do you think the word लिख रहे हो ना सब अपनी कॉपियों में? मेरे को लग नहीं रहा. लिखो. हाँ, हम लोग देख नहीं सकते, इसका ये नहीं कि फ़ायदा उठाओ. तो क्या है? डू यू थिंक द वर्ड dance is appropriate here. क्वेश्चन में appropriate आएगा तो आपको क्वेश्चन से देखना है स्पेलिंग. ओके. why it is so. why it's so. why. ठीक है. आंसर देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का. ये स्टूडेंट्स, I think the word dance. I think the word dance is appropriate here. As ants wants to say that just as cricket sung during summers. Similarly, many children do mistake in this spelling. Similarly, I wanted to write it here. Similarly. Today my Saturday spelling is very lagging, but I think this spelling is clear. SIMILARLY. Similarly. ठीक है. Similarly, he should dance throughout the winters. And be careless. The ants is mockingly the cricket. Mocking the cricket, not mockingly. Mocking the cricket means they are laughing the cricket. They are making laugh of cricket and they should make because why? Cricket has wasted its time in the summers. That's all. Okay, now write the question number 4, dear children. Question number 4, part 1. Okay, what is it? Which lines in the poem express the poet's comment. Okay, read them aloud. Okay, now see the answer. Write it also. Okay, don't just see the video. Write the answer. You have to just listen it. Okay. Okay, the lines are, wait, first you will write this. Okay, some cricketer fall.
Your answer is flock called this a fable. I'll want it true. Some cricket have 4 legs and some have 2. This is the line, okay? I'm doing it for you. And please write these all things in the inverted commas, okay? This arrow I am making na 2 arrows, write these lines. Flocks call, frog call. It's better if you write when I am speaking. Frog call this a fable. Flock call this a fable. I'll want it true. I'll want it true. True. Some crickets have 4 legs, and some have 2, and some have 2. Lines are completed. Close the inverted commas. Now see the part 2 you have to note down, which is write the comment in your own words. Write the comments in your own words. Okay, now I am writing the comment. Okay, dear students, you have to be careful. Okay, yes. Now see what is the comments. I am writing it, dear students. People say that this is the imaginary story. People say, flocks, people say. I'm doing it zoom because I wanted to show you only this line. Wanted to highlight it, choosing the color which is suitable for highlighting these things na, and I'm making the size little big so that you will understand it. Okay, people say that this is an imaginary story. Imaginary story. Written the listen the word imaginary very careful. Story. But I think it is based on real life. Okay, many people are careless like cricket, are careless like the cricket, and they just sit doing nothing. They just sit doing nothing. Written till here. Now, but when there is a crisis, when there is a
crisis, they might not be able to save themselves. Themselves. Wait. Themselves. Okay, now written from the problem or danger. Then what you will write? Just like the crickets in the poem. Just like cricket in the poem. Written all of you. So I think all of my dear students have written all the question answers. And if you all have written, so it is very good. And I really feel very proud of you all that you all have written all the questions. So it's very good. So now what I am going to do is, now I'll explain you each of the question, and we'll also try to learn the questions. Okay, so let's start. Okay, now see, you are having many questions. We have written all the questions with their answers also. Now you must be thinking that today my teacher has not explained us any of the questions. Don't worry, dear students. Now I'm going to explain you your questions, and also we'll try to learn it. Okay, so we have already done all the questions. Let's do now learning part. Poem. The ant and the cricket working with the poem. The cricket says, "Oh, what will become of me? When does he say it, and why?" The cricket says this when the winter when in winter he finds his cupboard empty and there is not a crumb to be found on the snow covered ground. तो क्या हुआ था, क्रिकेट ने तो हम अपना सारा टाइम जो है समर्स में क्या कर दिया था, वेस्ट कर दिया था, क्योंकि समर्स में क्रिकेट ने क्या करा, बस समर्स में क्रिकेट ने सिर्फ और सिर्फ गाना गाया और अपना टाइम जो है वेस्ट करा क्रिकेट ने, और कुछ भी समर्स में नहीं करा. तो क्या हुआ, जब वो विंटर्स आए, तो विंटर्स में तो यूजुअली यू हैव सीन द क्रिकेट, ants, these all animals, what they do, they just go in their shelter which they have made, and what they do, they live there only, because in winters they feel very cold. They did not come out in the winters, right? So like this only, the cricket also don't want it to come outside in winters, because in winters he feels very cold. But he has not saved anything. Yes, he only just sang the songs in the winters. He has not done anything, right? So what here comes is he finds his cupboard empty. उसने क्या करा, देखा कि उसकी cupboard तो empty है. The cricket says this in winters, when he finds his cupboard empty. When he finds his cupboard empty and there is not a crumb to be found on the snow-covered ground. अब देखो, crumb मतलब कोई भी चीज़, जैसे उसने कहा नहीं था, not a leaf, not a flower, not that, not that. So like this only, not a crumb to be found in snow-covered ground.
Because in winters, what happens here, students? Your ground is usually covered with the snow on, right? Now see, he was worried that he will die if he did not get any food. Okay? और उसको फिर इसका भी डर था कि अगर उसको कोई भी फूड नहीं मिला तो वो विंटर्स में मर जाए. तो अब इस आंसर को फिर से रिपीट कर लो, लर्न कर लो. The cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? The cricket says it, and when in winters he finds his cupboard empty and not a crumb to be found in the snow-covered ground. He was worried that he will die if he did not get any food during winters. Okay. Now see, next question. Find in poem the lines that means the same as neither a borrower nor a lender be. तो ये लाइन 6 पेयर्स निकली, लेकिन आपको पोम से ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जिनकी मीनिंग सेम निकलती हो. तो जो आपकी आंट्स थी उन्होंने ही कहा था कि but we aunts never borrow but we never lend, right? So ये लाइन्स हो गई. तो ये लाइन्स तो रटी गई होंगी अब 2-3 बार बोल के. उसके बाद आपको दिया है नीचे, what is your opinion of ants principle? आपको ants का प्रिंसिपल कैसा लगा कि ants का जो आपको ये लाइन जो ants ने बोली है इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या ये सही बोला ants ने? Yes, I think ants principle are right. ants के जो प्रिंसिपल है वो राइट है, क्योंकि अभी हमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी भी चाहिए जिससे हमें किसी से बोरो कोई चीज करनी पड़े, राइट? तो मेरे को लगा कि जो एंट्स के प्रिंसिपल है वो बिल्कुल ठीक है. किसके लिए? मेरे लिए. आई थिंक अगर आपको एंट्स के प्रिंसिपल सही नहीं लगे तो आप उसको अपोज भी कर सकते हैं, आप अपना आंसर बदल भी सकते हैं, राइट? तो yes, I think ants principle are right, as we must work hard and then we can enjoy fruits of our own actions. However, I also feel that if someone genuinely needs the help, then we must help them. अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को भी हेल्प नहीं करना, लेकिन अगर कभी किसी को genuinely, right, means he needs the help, वो कोई बहानेबाजी नहीं कर रहे, उनको हेल्प चाहिए, सच में चाहिए, तो we should help them. Okay? So yes, I think the ants principles are right, as we should work hard and earn the food, and we should work hard and we can enjoy the fruits of our own actions. However, I also feel that if someone genuinely needs the help, we should help them. Okay? Yeah, we must help them. जो मैंने आपको लिखवाया है आप वही याद करिए, ठीक है? तो yes, I think the ants principles are right, because we should work hard and should enjoy the fruits of our own actions. However, I also feel that if someone genuinely needs the help, we must help them. Okay, now see the next question, which is the ants tell the cricket, dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? तो इसमें जो आपका वर्ड डांस है क्या वो अप्रोप्रिएट है? क्या लगता है आप लोग को? तो जो वर्ड डांस है यूज़ किया गया, जब क्रिकेट ने उसको बताया था कि मैंने जो है अपना पूरा समर जो है सिर्फ गाना गाने में ही बिता दिया, सिर्फ गाना गाने में ही मैंने पूरा समर मेरा बिता दिया, मैंने कुछ भी चीज़ नहीं की उस समय. तो एंट्स को बहुत गुस्सा आया
कि भाई समर में तो हमारा टाइम होता है, हमें तो सारा फूड स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम जो भी हमारे विंटर्स हैं वो इंजॉय कर सकें और उस समय हमें कोई भी मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन सर आपने गाना गाया तो उनको बहुत गुस्सा है, उन्होंने कहा फिर आप तो इतने केयरलेस हो, आप तो डांस करके अपना विंटर भी वेस्ट कर दो, क्यों कर रहे हो आप इतनी मेहनत किसी से मांगने में। तो ये कहा आंसर। अब मैं आपको प्रॉपर आंसर बताती हूँ। I think the word dance is appropriate here. I think that word dance is appropriate here as Ant wants to say that just cricket sang during the summers. Similarly, he should dance throughout the winters and be careless. The ant is mocking the cricket. मतलब वो उसका मजाक बना रहे हैं। किसका? जो आपका क्रिकेट है। Ants. They are making fun of cricket. Okay? So I think the word dance is appropriate here because as cricket sang during summers, similarly he should dance throughout the winters and be careless. The ants is mocking the cricket means तो उसका क्या बना रहे हैं? मजाक बना रहे हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। I think the word dance is appropriate here because as just cricket sang during summers and said that similarly he should एक मिनट तो मैंने आंसर क्या लिखवाया था? I think the word dance is appropriate here. The word dance is appropriate here as ants wanted to say that just cricket sang during the summers. Similarly, he should dance throughout the winters and be careless. The ant is mocking the cricket. So now once again I am repeating the answer. What is your answer? Your answer is the word dance is appropriate here as the ants wants to say that just cricket wastes his time sang during summers. Like similarly, he should dance throughout the winters and be careless. The ants are mocking the cricket. अब आपका नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. Which lines the poem express the poet's comments? पोम में आपकी ऐसी कौन सी लाइन्स है जो आपका पोएट कहना चाहता है उसको एक्सप्रेस कर रही है? तो फ्लॉक सेज दिस इज अ फेबल. फ्लॉक सेज दिस इज अ फेबल. I'll run it through. Some cricket have 4 legs and some have 2. ये थी पोएट की लाइन जिसमें पोएट अपना आइडिया, अपना तरीका सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे. ठीक है. अब असला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये लाइन तो तुम्हें याद हो ही गई होगी, है ना? राइट द कमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स कि ये जो लाइन है इसमें जो है पोएट ने एक्सप्रेस किया क्या. तो पीपल से दैट फेबल इज अ काइंड ऑफ स्टोरी. मैं पहले अपना बता रही हूँ फिर मैं प्रॉपर आंसर दूँ. जो लोग हैं वो कहते हैं कि फेबल इज अ स्टोरी विच कन्वेज ओनली अ मॉरल, जिसके पास एनिमल्स वाले करेक्टर्स होते हैं. लेकिन जो आपके लेखक होते हैं, राइटर होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बिल्कुल ट्रू है. तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स भी हैं उनमें भी किसी के पास 2 लेग्स हैं, जो केयरलेस है, जो बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं करता, जिनका काम समय पर पूरा नहीं होता है. लेकिन कोई लोग जो है ह्यूमन बीइंग्स में बहुत ही ज़्यादा वो मेहनती हैं, वो सारा काम टाइम पे करते हैं, वो केयरफुल रहते हैं. तो ये है 4 लेग्स पीपल. तो अब मैं बताती हूँ प्रॉपर आंसर. पीपल से दैट दिस इज एन इमेजिनरी स्टोरी बट आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ. क्या? पीपल से दैट दिस इज एन
imaginary story. But I feel that this is a real. This I think it is based on real life, right? ये किस में बेस्ड है? ये रियल लाइफ में बेस्ड है, जो आपकी फेबल स्टोरी है, आपकी बेस्ड है. Many people are careless like a cricket, and they just sit doing nothing. But when there is a crisis, they might not be able to save themselves. मतलब क्या कह रहे हैं कि people say this is a fable. People say this is a in imaginary story. But I think it is based on real life. Many people are careless like a cricket, and they just sit doing nothing. But when there is a crisis, they might not be able to save themselves from a problem or danger, just like cricket in the poem. तो लास्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है? फिर से people say it is a what kind of imaginary story, but I feel that it is based on real life. But I think it is based on real life. Many people have two legs, right? Like cricket, they just sit doing nothing. But when there is crisis, they might not be able to save themselves from a problem or danger, just like cricket in the poem. Okay, so dear students, here we have done all our question answers. अब मैं शुरू से वर्ड मीनिंग से लेकर क्वेश्चन आंसर्स तक आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है? सबसे पहला है आपका एक्सटर्म टू सिंग, यानी कि यूज्ड इन सिंगिंग और इन अ हैबिट ऑफ सिंगिंग. नेक्स्ट इज famine, scarcity of food or nothing to eat. Then lay nothing by, save nothing. Scott's Old English said. The cricket says, "Oh, what will become of me? When does he say it and why?" तो इसमें आपका क्या आएगा? The cricket says this when in winter he finds his cupboard empty and not a crumb to be found on the snow-covered ground. Clear? He was worried that if he will die if he did not get any food to eat. Now your next question is, find the line in the poem find the lines in the poem. Find in the poem the lines that means the same as neither a borrower nor a lender. B. But we ants never borrow, we ants never lend. Then next is question, what is your opinion of the ants principles? So here I would like to say this, that yes, I think the ants principles are right. The ants principles are right, because we must do hard work and enjoy the fruits of our own actions. We should enjoy the fruits of our own actions, right? इतना क्लियर हो गया आप सबको? However, I also feels that if someone genuinely needs the help
we must help them. Okay, now our next question is, in the ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? Yes, I think the word dance is appropriate here because the ants wanted to say this. The ant, just as cricket sang and sang summers, sang during the summers and wasted the summers. They said that dance the wind. Similarly, dance the winter throughout. So what they said, dear student, I think the word dance is appropriate here, as ants want to say that just as cricket sang during the summer, similarly he should dance throughout the winters and be careless. The ants mocking the cricket. Ants is mocking the cricket. Now, which lines in the poem express the poet's comments? Read aloud. So, Flock says it is a fable. I'll flaunt it through. Some cricket have two legs. Some cricket have four legs and some have two. अब आपका next question आता है. Write the comments in your own words. So, what comment you all are going to write? People says that it is only an imaginary story, but I think it is based on real life. Many people have two legs like cricket, but when there is a crisis, some people have two legs like cricket. They just sit doing nothing. But when there is a crisis, they must not be able to save themselves during a problem or a danger, just like cricket in the poem. So here we have learned, revised our whole question answers in the cricket one. Okay, so thank you dear students for watching the video, and do like and subscribe it if you like our teaching. Thank you so much.